सो सब यूनिट ऑफ 1.2 मैसूर डिवीजन। सो इससे पहले हम बेंगलुरु डिवीजन के बारे में जाने, तो आज हम मैसूर डिवीजन में उडुपी, चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़, हासन, कोडगु, मंड्या, मैसूर एंड चामराजनगर के बारे में कंप्लीट नोट्स जानेंगे। सो पेज नंबर 48, एक्सरसाइज वर्क, fill in the blanks with a suitable word. Dakshina Kannada was divided in the year 1997 to create उडुपी डिस्ट्रिक्ट। उडुपी डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए या तश्कील देने के लिए डैश ईयर तश्कील दी गई को, तो 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश एंड डैश आर द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मैसूर डिवीजन। सो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट यानी कि साहिली अजला कौन से हैं? सो साहिली अजला उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़। आवर नेशनल एनिमल इज डैश टाइगर। वाइल्ड एलिफेंट्स आर टैम्ड यूजिंग डैश टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे जंगली हाथियों को सुधारने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हैं बोल को? कैडा ऑपरेशन। नेक्स्ट वन, द डैश डिस्ट्रिक्ट इज मैसूर डिवीजन ग्रोस मोर कॉफी। तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा काफी की काश्त होती बोले, तो यहाँ पर आंसर इज चिकमंगलुरु। नेक्स्ट, कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश इन कोडगु डिस्ट्रिक्ट। सो कुर्ग जिले में कावेरी नदी का जन्म कहाँ होता या कहाँ लेती बोल को? आंसर तला कावेरी। नेक्स्ट वन, कुडमल रंगराव डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर upliftment of dash. So answer is untouchable. Next one, the world famous dash festival is celebrated Mysuru. So answer Dasera. Next one, the dash and dash districts of Mysore division have ports. Answer is दक्षिण कन्नड़ एंड उडुपी। यहाँ पर क्या है बोले तो अजला में बंदरगाह, पोर्ट मीन्स बंदरगाह। मैसूर डिवीजन के कौन से अजला में बंदरगाह मौजूद है बोले तो दक्षिण कन्नड़ एंड उडुपी। द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वन सेंटेंस। मैसूर डिवीजन में कितने अजला हैं, यानी कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अ मैसूर डिवीजन? आंसर, देयर आर 8 डिस्ट्रिक्ट्स। There are 8 districts are there in Mysore division. So how did the name Mysore come into being? So answer is, Mysore is called Mahishanandu historically as well as mythologically. According to mythological stories, the goddess Parvati killed Mahishasura in the form of Chamundeshwari. The place where Mahisha was killed became Mysuru. So यहाँ पर क्या है, मैसूर डिवीजन का नाम यानी कि मैसूर नाम किस तरह से पड़ा? तो यहाँ पर पार्वती यानी कि गॉडेस्ट, हिंदूस गॉडेस्ट killed Mahishasura in the form of Chamundeshwari. Named the Wadiyar's king who contributed to the development of Mysore kingdom during the early part of 20th century. So 12th question. So 20वीं सदी में क्वेश्चन नंबर 12, 20th century. Krishnaraja Wadiyar IV contributed to the development of Mysore kingdom during early part of 20th century. The next question, what name did Britisher give to the coastal region of Karnataka? Answer, the Britishers named the coastal region Canara. So next 14th question, name any 2 famous rivers in the Mysore division. The 2 famous rivers in the Mysore division is Kaveri and Hemavati. Next question is, name the districts which receive highest and lowest rainfall in the Mysore. यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश और सबसे कम बारिश होने वाले अजला के नाम।
Answer: highest rainfall Udupi and lowest rainfall Mandya. Next question: name any two minerals available in the Mysore division. Answer: chromite and bauxite or manganese. Two minerals available in this division. What is the major occupation of the people in the coastal area? So answer is fishery. And next question, 18th question, name any two famous forest area in the Mysore division. So answer: famous forest area in the Mysore division are Nagarhole and Bandipura. Name any two tribal groups living in the Mysore division. Answer: two tribal groups living in the Mysore division, Janakuruba and Koraga. Next one is, name any two bird sanctuary and wildlife sanctuary of Mysore division. Bird sanctuary, Ranganatittu bird sanctuary, and then Gudavi bird sanctuary. Next here, wildlife sanctuary, Melakote wildlife sanctuary and Kaveri wildlife sanctuary. सो 20वां क्वेश्चन क्या है? दो बंदरगाह, रिहायशी बंदरगाह और जंगली. नेम टू नेशनल पार्क्स इन मैसूर डिवीजन. राजीव गांधी नागराहोले नेशनल पार्क एंड बंडीपुरा नेशनल पार्क. 22. नेम एनी 6 क्रॉप्स ग्रोन इन मैसूर डिवीजन. पैडी, रागी, maize, green gram, urad and tobacco. 23rd. Name any two irrigation projects in Mysore division. Answer: Krishnaraj Sagar irrigation project and Harangir irrigation project. Write the name of the harvest festival celebrated in Kodagu. Answer: Hutturi Habba is the name of the harvest festival celebrated in Kodagu. 26th question is, where is Rangayyana, the repertory theatre based at? Answer is Mysore. 27. Name any two famous Kannada novelists of Mysore division. Answer: Dr. S.L. Bhairappa and Purna Chandra Tejasvi. 28th question. Which university in Mysore division has celebrated 100 years? Answer: the University of Mysore has celebrated 100 years. 29th question. What is the name of the center which provides health care in rural areas? Rural Sub-Health Center. 30th question. Name any two good health indicators. Answer: good health indicators are low child mortality rates and low maternal mortality rates. Next question, 32. Name any two freedom fighters who fought against untouchability. Answer: Kudamal Rangarao, Taga Dur Ramchandra Rao. Next is 33. What is the Shravanabelagola famous for? Answer: Shravanabelagola famous for Gomateshwara, a monolith ideal. 34. Name any 4 freedom fighters of Mysore division. Freedom fighter of Mysore division: H.C. Dasappa, Yashodhar Dasappa, Karnad Siddheshwar Rao, H.K. Veeranna Gowda, K.T. Basayam.